ஒளிகர்கோன் வெப்பொழித்த புகலியர்கோன் களலோற்றி ஆழிமிசை கண்மிதப்பில் அணைந்த பிரானடி போற்றி. வாழி திருநாவலூர் வன் தொண்டர் பதம் போற்றி. ஊழிமலி திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி. இடியதன் ஒரு பூமை ஒளமிகு கரியது பிடியதன் ஒரு உமை கொளமிகு கரியது வடிகொடு அனதடி வழிபடும் அவரிடர்கடி கணபதி வர அருளின் நன்மிகு கொடை கடி கணபதி வர அருளின் நன்மிகு கொடை வடிப்பினர் பயில் பலி வலமுறை இறையே. நங்கடம்பன்னை வெற்றவள் வங்கினன் தென்கடம்பை திருக்கர கோவிலானம் கடம்பன்னை பெற்றவள் பங்கினன் தென்கடம்பை திருக்கர கோவிலான் தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே. ஓம் சமரசூரவன் மார்பை தடிந்த வேல் குமரன் தாதைன குடும்பம் மேவிய அமரர் கோவிலுக்கு தொண்டர்கள் அமரர் கோவினுக்கு அன்புடை தொண்டர்கள் அமரர் லோகமதாளுடையார்களே. ஓடுடைய செவியன் தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர்த்துவன் மதிசூடி தோடுடைய செவியன் விடையேறி ஓர்த்துவன் மதிசூடி காடுடைய சுடலை காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர் கள்வன் ஏடுடைய மலரான் ஏடுடைய மலரான் முனை நாள் பணிந்தேத்த அருள் செய்த பீடுடைய பிரமாபூரம் பீடுடைய பிரமாபூரம் மேவிய இவனன்றே அருள் நெறிய மறைவல்ல முனியகன் தன் பொய்கை அலர்மேய அருள் நெறிய மறைவல்ல முனியகந்தன் பொய்கை அலர்மேய திருநெறிய பிரமாபூரம் திருநெறிய பிரமாபூரம் இவன் தன்னை ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த ஒரு நெறிய மனம் வைத்துணர் ஞான சம்பந்தன் உரை செய்த சம்பந்தன் உரை செய்த திருநெறிய தமிழ் வல்லவர்
திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல்வினை தீர்தல் எளிதாமே. சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். Om Namah Shivaya. Good to see all of you online again after a couple of weeks of break. So our usual routine here, Annie is here today. So we will do Ganesh Puja after this, and then the Sankalpam, and then the Lagunyasam, Panchamukha Puja, Rudra Abishekam, and Rudra Trishati, and Shiva Stotra Shatanamavali Archana. We'll get going. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Athunahindrakshmantam Chitranghrabam Dangrubhaya Mahasti Dakshinena Mahitva Ativikhormintu Videshnantu Vimagam Vimatramavobihi Mahitva Suradevanamarta Saditsantam Bhimannagam Bharayante Etonandhranstavameshanam Vasvaswarajam Naradasamardisannaham Prasto Shatubhagasi Satsrabhatsa Maghiyamahanam Abhiradasa Jugurat Ano Varadakshinena Visavyena Pramrusham Indramana Vasornirbhak Upakramasva Varadrishata Drishna Jananam Da Asustarasya Vedaham Indraya Unate Astivaja Vipre Ebhi Sanitvaha Asmabam Sutham Sanuhi Yajavaste Vaja Asmabhyam Vishwaschandra Vashaishamakshu Jarante Vishashida Ganapate Gane Sutva Mahar Vipratamam Kavina Narate Tvatkriyate Kinchanare Mahamarkam Bhagavan Chitramarcha Abhikyana Magavannadamanhan Sake Bodhivasupathe Sakhi Inam Ranang Ridiranagrasatya Shusma Bhakte Chida Bhajarhaye Asman. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gananahantva Ganapadigam Avamahe Gavinka Vinamuphamasravastamam Eshtarajam Brahmanam Brahmanaspatha Anashanvanhotevi Siddha Sadhanam Mahaganadipataye Namo Namaha. Asmin Bhimbe Mahaganadipatim Dhyayami. Samvardhagnittarit pradipta kanakam Prasparti tejorunam Gambhiradhvani samaveda janakam Tamradaram sundaram Ardhendudutillola pingalam Jadabhara prabadhodakam Vande siddhasura surendra namitam Purvamukam Shulinah. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Hrim Namah Shivaya. Purvangamakaya Namaha. Tatpurushaya Vidmahe Adhevaya Dhimahi Na Rudra Prachodayat. Om Gorhebhyo Tagorhebhyo Goragortrebhyo Sarvebhyo Sarvasarvebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhyam Kalabhra Brahmaranjana Dudinibam Vyavrittavingekshanam Gannodbhasidabo Kimastagamanim Prodbhinnadashtankuram Zarpa Prodakapalam Shukti Shakalam Yakirnatakaram Vande Dakshami Swarasya Vadanam Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Hrim Namah Shivaya. Kshinangamukhaya Namaha.
सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनातिभवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः प्राळेयाचलमिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरवेन प्रभं भस्माभ्यङ्गमनङ्गदेहदहनं ज्वालावलिलोचनं ब्रह्म विष्णु मरुद्गणार्चितपदं ऋग्वेदनादोदयं वन्देऽहं सकलं कलङ्करहितं स्थानोर्मुखं पश्चिमम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ ह्रीं नमः शिवाय पश्चिमाङ्गमुखाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमतनाय नमः सर्वभूतदमाय नमो मनोन्मनाय नमः गौरं कुङ्कुमपङ्कितं सुतिलकं व्याभाण्डवण्डस्थलं ब्रूविक्षेपकटाक्षवीक्षरलसत् संसिक्तकर्णोत्पलं स्निग्धं बिम्बफलादरं प्रहसितं नीलालकालाकृतं वन्दे याजुषवेदघोषजनकं वक्त्रं हरस्योत्तरम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ ह्रीं नमः शिवाय उत्तराङ्गमुखाय नमः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो व्यक्ताव्यक्तनिरोपिधिं च परमं शत्रुं सतत्वादिकं तस्माद् उत्तरतत्त्वमक्षरमिति ध्येयं सदा योगिभिः ओङ्कारादिसमस्तमन्त्रजनकं सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं वन्दे पञ्चममेश्वरस्य वदनं कव्यापि तेजोमयं ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ ह्रीं नमः शिवाय ऊर्ध्वाङ्गमुखाय नमः ॐ नमः शिवाय नवलुलग्न्यासम् ॐ मतात्मानकं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वक्षितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च भरेनिमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपानिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योदारिणं वशस्कन्दसमारूढं उमादेहार्तधारिणं मूर्तेर्नाप्लुतसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वैविश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा सम्यक् ततो यजनमारभेत् ॐ प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु द्वादयो विष्णुतिष्ठतु हस्तयो हरतिष्ठतु बाह्वन्द्रतिष्ठतु जठरे अग्नितिष्ठतु हृदये शिवतिष्ठतु कंठे वसवतिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयो भायुर्तिष्ठतु नयनयो चन्द्रादित्यो तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनो तिष्ठेतां ललाटे रुद्रा तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्या तिष्ठन्तु शिरसि महादेव तिष्ठतु शिखायां वामदेव तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवाशङ्करो तिष्ठेतां सर्वतो वायुर्तिष्ठतु ततो बहिर्सर्वतो अग्निज्वालामाला परिवृता तिष्ठतु सर्वे सङ्गे सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु सर्वान् महाजनान् रक्षन्तु ॐ निर्मे वाचि श्रुतः वाक्हृदये हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रुतः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रुतः मन अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रुताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृतेः अमृतं ब्रह्मणि
पृथिवी मे शरीरे श्रुता शरीरगं हृदये दह्यं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु श्रुताः लोमानि हृदये दह्यं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रुतः बलगं हृदये दह्यं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदये दह्यं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रुतः मन्युर्हृदये दह्यं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा महात्मनि श्रुतः आत्मा हृदये दह्यं मयि अहमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्महात्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणपुनराकहुतमाकात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तत्तिष्ठतमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्यायप्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः शङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो यो साभादित्य परमपुरुष स एष रुद्रो देवता ॐ नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः ॐ नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः अम्ब सदाशिव परमेश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे अभिषेके विनियोगः ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः वर्षपूर्णमासात्मने तज्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः गरुडभस्मन्दात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वघृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः वर्षपूर्णमासात्मने स्पृशे स्वाहा चातुर्मास्यात्मनिष्काय वषट् गरुडभस्मन्दात्मने कवचायं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रय वषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय पठ भूर्भुवस्वरमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतै अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनुषं रुद्रानुवाक्काञ्जपन् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धये द्रुपदं विप्रोभिषिञ्चेक्षिवं पीठं यस्य दरिद्री जलधरकलशं लिङ्गमाकाशमूर्तिम् नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुष्मं चन्द्रवन्यर्कनेत्रं कुक्षिसप्तसमुद्रं भुजगिरिशिखरं सप्तपादाळपादं वेदं वक्त्रं षडङ्गं दशदिशि वशनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्माण्डव्याप्तदेहवसतिमरुचाभासमानाभुजङ्गैः कण्ठे कालाकपर्दा कलितशशिकला चण्डकोदण्डहस्ताः त्रयक्षा रुद्राक्षमाला प्रणतभयहरा साम्बवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभव न प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ घनानाहन्त्वा गणपतिं वामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे न कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगच्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे दत्ताच मे क्षेमच्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूच्च मे प्रसूक्ष मे क्षीरञ्च मे लयञ्च मे ऋतञ्च मे मृतञ्च मे अक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवादिच्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे शूसा च मे ओदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यौतोतेषभे नमः नमस्ते स्थितन्मने बाहुभ्यां तथे नमः या तैष शिवतमा शिवं बभूवथेदनुः शिवा सर्व्याह्यातवतया नो रुद्रमुडय या ते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी या नस्तनुभासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः आमिषं गिरिशन्तहस्ते विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्ताङ्कुरुमाहिगिंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि तानः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमनः असत् अद्यभोजपतिभक्ता प्रथमो दैव्याभिषक् अहेगिञ्च सर्वाः जम्बयन् सर्वा आश्रयात् धान्यः
असव्यस्ताम्र अरुणमुतभभृश्यमङ्गलः ये क्षेमागं रुद्रा अभितो धिक्षुसुधा सहस्रसो वैशाखं हेडहीमहे असव्यवसर्पधिनीलग्रीभो विलोहितः तैनं गोपा अदुष्यन्नदुष्यन्नुदहार्यः तैनं विश्वाभूतानि सदुष्टमढयातनः नमस्ते नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो येऽसि सत्त्वानोऽहं तेभ्यो कर्णमः प्रमञ्चतन्मनस्वभयोरात्मह्योज्याम् याश्च ते हस्तेषु वपराता भगवोप अवदत्यस्वगं सहस्राक्षसतेषु ते शीर्षशल्यान्हमुखा शिवो नः सुमना भव यज्झन्दनः कपर्दिनः विशल्यबाणभागं मुत अनेशन्नस्ये सभापुरुष्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेरिष्टमहस्ते बभूव ते धनुः ताह्यास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नाथाय धृष्णवे बाभ्यां तते नमः बाहुभ्यां तव तन्मने परिते तन्मनो हेतिरस्मान् वणक्त विश्वतः अतो यशस्तभारे अस्मन्निदेहितं सम्भवे नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निघालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे शेहान्येषाञ्च पतये नमो नमः वृक्षेभ्यो ऋकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते दीनां पतये नमो नमः प्रजानां पतये नमो नमः हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमः भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमः रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूर्याय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमः भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्धयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नभीताय तावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनां पतये नमो नमः ककुवानां पतये नमो नमो निषङ्गिनैः सिद्धिमते तस्करान्हां पतये नमो नमः वञ्चते परिवञ्चते स्ताह्यूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय अरण्यान्हां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिगागं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमः सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृतान्हां पतये नमो नमः उष्णेषिणे गिरिचराय चान्हां पतये नमो नमः समुद्भ्यो धन्भाविभ्यश्च नमो नमः तन्भानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च नमो नमः आयच्छद्भ्यो शिषद्भ्यश्च नमो नमः स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च नमो नमः स्कद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च नमो नमः तिष्ठद्भ्यो दावद्भ्यश्च नमो नमः सपाभ्यः सपापतिभ्यश्च नमो नमः अश्वेभ्यः स्वपतिभ्यश्च नमः नमाभ्यादिनेभ्यो विद्यन्तीभ्यश्च नमो नमो गणाभ्यस्त्रिकंहतीभ्यश्च नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च नमो नमो व्रातेभ्यो ग्नेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च नमो नमो दिभ्यो रथेभ्यश्च नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च नमो नमः पुत्रभ्यसङ्गृहीतृभ्यश्च नमो नमः तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमो नमः पुञ्जिष्ठे निषादेभ्यश्च नमो नमः सुकृद्भ्यो धन्मकृद्भ्यश्च नमो नमः मृगयेभ्यः स्वनिभ्यश्च नमो नमः स्वपदिभ्यश्च नमः नमो भवान् leave it here. Later on somebody may. Prabhabhya sabhapatibhyascha namo namaः स्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च नमः नमाभ्यादिनेभ्यो विद्यन्तीभ्यश्च नमो नमो गणाभ्यस्त्रिगंहतीभ्यश्च नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च नमो नमः गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च नमो नमः रथेभ्यो आरथेभ्यश्च नमो नमः रथेभ्यो
रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्य सेनानिभ्यश्च वो नमः क्षत्रिभ्य संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षद्भ्य रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः सिगृद्भ्यो धन्वभ्यश्च वो नमो नमः मृगयेभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्य स्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च कंठाय च नमः कपिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च धन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेरुष्टमाय च ईश्मते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वृष्यसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वने च नमो अग्रिहाय च प्रथमाय च नमः हाशवे च अजिराय च नमः शीघ्र्याय च शिभ्याय च नमः होर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपराय च नमः मध्यमाय च अपकल्पाय च नमः कन्याय च पत्न्याय च नमः शोभ्याय च प्रतिसत्याय च नमः याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमः वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः हाससेनाय च असुरताय च नमः सूराय च विन्दते च नमः वर्त्ने च भरुथिने च नमः बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुतसेनाय च नमादुन्दिप्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो विषङ्गिने च सुधिमते च नमः तीक्ष्णे च पेचायितने च नमः स्वायुधाय च धन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः आख्याय च नेत्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमः आद्याय च वैशन्ताय च नमः खूप्याय च वत्याय च नमः वर्ष्याय च आवर्ष्याय च नमः मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः शीघ्र्याय च तप्याय च नमः वात्याय च रेश्म्याय च नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो ऋकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्तीत्याय च कौल्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आधार्याय च आह्लाद्याय च नमः शस्प्याय च फेन्याय च नमः शिखत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किगंशलाक्षायनाय च नमः कभद्रे च पुलस्ते च नमः होगोस्त्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गैह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पांसभ्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः लोप्याय च औलप्याय च नमः होर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पण्याय च पर्णसद्याय च नमः उपक्रमानाय च विघ्नते च नमः किदते च प्रकिदते च नमः वक्रीकेभ्यो देवानागम हृदयेभ्यो नमः विक्षीणकेभ्यो नमः विचिन्भत्केभ्यो नमः निर्हतेभ्यो नमामि वाक्येभ्यः द्राभे अन्धसस्पथे दरिद्रन्नीललोहिते येषां पुरुषाणां हेषां पशूनां माभिर्मार्होमो येषां किञ्चनाममते याते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नामडजीवसे इमागं रुद्राय तपसे कपद्दिने शयद्वीराय प्रवरामहे मतिम् यथा न समसतिपदे चतुष्पथे विश्वं पृष्ठं ग्रामे अस्मिन् अनाथं उडानाद्भृतनामसाविते मते यच्छञ्चयोश्चमनराय जय पिता तस्यामतवर्धप्रणीध आनामहान्तं तमनोर्पखं मानवक्षन्तं तमानवक्षितं
मानवदी पितरं मातरं प्रियमानस्तनुरुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन हेमान आयुषिमान् गोष्मान् अश्वे शरीरिषः ईरान्मानरुद्रभामितो नमसा विदेमते आरात्ये घोक्नौतपौरुषग्ने सयद्वीरायसं नमस्मे ते अस्तु रक्षाक्षणादि च देव ब्रूह्यताक्षण शर्म यच्च दिबर्हाः स्तु हे श्रुतङ्गर्तसदं युवानं मृगन्न भीमोपत्नमग्रं वडाचरित्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्तपरित्वेषस्य धर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनस्वमीड्वस्थोकायतनहाय मृडय मेरुष्टमशिवतमशिवो भव परमे वृक्षायधनिधाय तिमसानः चनपिनाकविभ्रदागेः किरतविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगम् एतयोन्यमस्मन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहोस्तव हेतयः आसामीशानो भगवः पराचीनमुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषाकं सहस्रयोजने पतन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवे अन्तरिक्षे भवा अदि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः सर्वादः क्षमाक्षराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवकं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षे स्पिञ्जरः नीलग्रीवा विलोहिताः रक्षय ऐलभृत् ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकावन्तो निषङ्गिनः ये हेतावन्तश्च भूयागं सच्चतिशो रुद्राविदस्तिरे तेषागं सहस्रयोजने मदन्वानि तन्मसि नमो ऋभ्यो ये अन्तरिक्षे ये दिवि सामह्नं वातो वर्षमिसभस्तेभ्यां सप्राच्छेद दक्षिण सप्रतीच्छेद सोदीच्छेद सोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नामडयन्ति थेयं दुष्मयश्च नोद्वैषितं वा जम्बे ददामीं त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीह्यमामृतात् त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीह्यमामृतात् त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीह्यमामृतात् यो रुद्रोऽग्नव्योऽप्स्योषधीषु यो रुद्रो विश्वपूर्णवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्ट्येषु सुदन्भाय विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेशोः मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेषजोऽयं शिवाविमर्शनः एते सहस्रमहिधं पासामृत्यमर्त्याय हन्तवे यज्ञस्य महायः सर्वान् वैजामहे मृत्यभे स्वाहा मृत्यभे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसिरुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्याह्यस्व सदाशिवों नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवों न विष्णुस्योषसेमा वर्धन्तु हङ्गिरः नैर्वाजेभिरागतम् आजुश्च मे प्रसवश्च मे प्रेतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे कृतिश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुच्च मे चित्तञ्च मादितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मोजश्च मे सखश्च मायुश्च मे जराच मे आत्मा च मे तनूच मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे पर्वंश च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मन्युच्च मे भामच्च मे इम्मच्च मे इम्बच्च मे झेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे स्मा च मे द्राघया च मे वृत्तं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशच्च मे तुषी च मे क्रीडा च मे मोदच्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे
वेद्यंच मे भूतंच मे भविष्यंच मे सुगंच मे स्पदंच मे रुद्धंच मे रुद्दिच मे क्लुप्तंच मे क्लुप्तिच मे मतिच मे सुमतिच मे संच मे मयश्च मे प्रियंच मे कामश्च मे सो मनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगच्च मे द्रविणंच मे यन्ताच मे दत्ताच मे क्षेमच्च मे धृतिच्च मे विश्वंच मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सूच्च मे प्रसूक्ष मे क्षीरंच मे लयंच मे अमृतंच मे क्षमे मे नाम यच्च मे जीवादुच्च मे दीर्घायुत्वंच मे मित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे शूसाच मे सुदिनंच मे च मे सुनृता च मे पयच्च मे रसच्च मे घृतंच मे मधुच मे सग्दिच्च मे सपीति मे कृषि मे वृष्टिच्च मे चैत्रंच औद्भिद्यंच मे रयिच्च मे रायच्च मे पुष्टंच मे पुष्टिच्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयच्च मे पूर्णंच मे पूर्णतरंच मे क्षितीक्ष मे कुयवाच्च मे नंच मे सुच्च मे बृहेश्च मे यवाच मे मासाच मे तिलाच मे मुद्दाच मे कल्वाच मे गोधुमाच मे मसराच मे प्रियंगवच्च मे आनवच्च मे श्यामाकाच मे निवाराच मे अस्माच मे मृत्तिकाच मे गरयच्च मे पर्वताच मे चिकताच मे वनस्पतयच्च मे हिरण्यंच मे यक्ष मे शीशंच मे त्रिपुक्ष मे श्यामंच मे लोहंच मे अग्निच्च मे आपश्च मे विरुदच्च मे औषधच्च मे कृष्टवच्चंच मे घ्राम्याच मे पशुहारण्याच यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तंच मे वित्तिच्च मे भूतंच मे भूतिच्च मे वशिच मे वसतिच्च मे कर्मच मे शक्तिच्च मे अत्तच्च मे येमच्च मे यतिच्च मे गतिच्च मे अग्निच्च मे इन्द्रच्च मे सोमश्च मे इन्द्रच्च मे सविताच मे इन्द्रच्च मे सरस्वतीच मे इन्द्रच्च मे पूषाच मे इन्द्रच्च मे इन्द्रच्च मे मित्रच्च मे इन्द्रच्च मे वरुणच्च मे इन्द्रच्च मे त्वष्टा मे इन्द्रच्च मे दाता मे इन्द्रच्च मे विष्णुच्च मे इन्द्रच्च मे अश्विनोच मे इन्द्रच्च मे मरुतच्च मे इन्द्रच्च मे विश्वेच मे देवा इन्द्रच्च मे पृथ्वीच मे इन्द्रच्च मे अंतरिक्षंच मे इन्द्रच्च मे द्यावच्च मे इन्द्रच्च मे दिशच्च मे इन्द्रच्च मे मूर्धाच मे इन्द्रच्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगमसुच्च मे रश्मिच्च मे दाहाव्यच्च मे ग्राह्याच मे इन्द्राग्नच्च मे वैश्वदेवच्च मे मरुत्वतीयाच मे माहेन्द्रच्च मे आदित्यच्च मे पुत्रच्च मे सारस्वतच्च मे भूषणच्च मे पार्थिवतच्च मे आर्योधनश्च मे यत्मच्च मे बर्हिच्च मे वेदिच्च मे दिष्णियाच्च मे सृशच्च मे समसाच्च मे ग्रावानच्च मे स्वरवच्च मे परवाच्च मे दिशवनेच मे द्रोणकलशच्च मे वायव्यानच्च मे भूतभृच्च माधवनीयच्च मे आग्नेयग्रंच मे हविर्धानंच मे गृहाच्च मे तदच्च मे पुरोडाशाश्च मे पचदाच्च मे अमृतच्च मे सुगाकारश्च मे अग्निच्च मे कर्मच्च मे अर्कच्च मे सूर्यच्च मे प्राणच्च मे स्वमेधच्च मे पृथ्वीच्च मे दितिच्च मे द्यौच्च मे चक्करीरङ्गुलयोश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे दामच मे स्तोमच्च मे जुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतिच्च मे वसञ्च मे होरात्र्यो अवश्यभ्रन्द्रेश मे यज्ञेन कल्पयताम् गर्भाच्च मे त्रिविच्च मे त्रिभीच मे द्यवा मे वंशाविच्च मे वंशावीच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साच मे तद्यवाच्च मे तद्यौहीच मे पष्टवाच्च मे पष्टवीच मे उक्षाच मे वशाच मे ऋषभच्च मे वेहच्च मे नड्भाञ्च मे धेनुच्च मे आयुर् यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पतां ध्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर् यज्ञेन कल्पतागं श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे तिस्रच्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयाविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्ततिश्च मे नवविंशतिश्च एकत्रिंशच्च मे त्रयत्रिंशच्च मे शतस्रच्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिचश्च कृतिश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियच्छान्त्यायनच्छान्त्यश्च भावनश्च भुवनश्च
आदिपदिश्च ॐ निरादेवहुर्मनुर्यज्ञनि बृहस्पतिरुक्ता मदानि सकं सिसद्विश्वे देवासूक्तवाच पृथ्वीमातर् मामाहिंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्याम् मनुष्ये मा देवा अवन्तु तरो न मदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்திர எந்தாய் போற்றி பாகம் என்னுரானாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கயிலை மலையானே போற்றி போற்றி அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி கண்ணாரமுதம் கடலே போற்றி போற்றி பலம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் ஓம் தேஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய மகாதேவாய த்ரயம்பகாய திரிபுராந்தகாய த்ரிகாக்னிகாலாய காலாக்னிருத்ராய நீலகண்டாய மிருத்யுஞ்சயாய சர்வேஸ்வராய சதாசிவாய ஸ்ரீமன்மகாதேவாய நமः ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवों तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तन्महेशाय विद्महे वाक्शुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ शतवेदशेषनवामसोममराति दहाति वेदः तनःपर्षदि दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरिताद्यग्निः वामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। नेत्वं पारयानप्यो विश्वाः ऊश्च पृथ्वी बहुलानहुर्वि वातो काह्यतनयाय संयोः स्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावां दुरितादिपर्षि अग्ने त्रिभन्मनसा गृणानो अस्माकं बुद्धिविता तनूनां तनाजदकं सहमानमक्रमग्निकं भूयेम परमासदस्तात् सनपर्षदि दुर्गान् विश्वाचामध्येवदिदुरिताद्यग्निः रत्नोष्कमीज्योद्पुरे सनाच्छहोत्थानव्यससत्से स्वाञ्चाहाग्ने धनुवं विप्रयस्मभ्यञ्च सौ गाभिर्जुष्टमहिजानिषिक्तं तवेन्द्रविष्णुर्निसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमपि सम्भतान वैष्णवीं लोक युगमादयन्तम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। Murtabhishekam hastu. Rupa Gita, which is
work by Ribhu Maharshi. And Ribhu Gita is the epitome of Advaita Vedanta. So Ramana Maharshi had mandatorily chanted every day in the ashram, particularly chapter 29. So more of it sometime later. So right now, what we will do is, we would play that video for you. And then the time the video is done, we should be ready with the rest of the Sodasopachara Puja steps. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. So this is verse 41. The simple message is neither me nor you. In that Parabrahman state, it's neither me nor you. Both of us dissolve into that one ultimate reality. And not only both of us dissolve into that one ultimate reality, everything else dissolves into that. You remember, we have been repeatedly analyzing this, that the purpose of any religion, doesn't matter what it is, is to answer the most important questions in life. Those are the three questions. Who are you? That's yourself asking the question. Who am I? Who is me? Who is this I? And the person in front of you, the second person, who are you? Who is that person? And what is everything else? The things that are in this world. So who am I? And who is everything else other than me, the so-called other than me, things, people, animals. And then what is that ultimate reality, if there is one, and how all these three are connected. So that's are the three important questions that any religion should answer. Religion is not to tell you how to behave. How to behave is common sense. So that's in way of answering these questions. Here is one right here, popping right at you. So it's neither me nor you. So when there is neither me nor you, so what it means, only absolute peace. So only when there is me and you, there is fights and conflicts. But when the me and you are one and the same, there is no fight, there is no problem, there are no issues. So there is just absolute harmony. I remember this, a friend of mine's daughter, she was very young, and once she started her Facebook, this is how she defined herself, which was amazing. That she said, I am you with a different conditioning and upbringing. But basically, I am you, and the only reason that I look different than you because my conditioning was different, my upbringing was different. But basically, I am you. So that's what it is. So here's neither me nor you. Na yatraham na yatratvam swayam swayam yatraiva nishchayam shantam tanmayo bhava sarvada onidaga. That na yatra aham na yatra, I am not there. Tvam na yatra aham na yatra tvam, in which, in that state of tat, of which I am asking you to be always immersed in, tanmayo bhava sarvada, in that state, na yatra aham na yatra tvam, I am not, and which you are also not. Not only you are not, but listen further, na yatra tvam swayam swayam. Na yatra tvam, you are not yourself either, in which you yourself are not indeed yourself. The thing, what you think you yourself are, that yourself is not yourself. It's a little abstract, but try to get the meaning. Na yatra tvam swayam swayam, in which you yourself
or not indeed yourself. So the second yourself being what you think yourself to be, the mental complexes, the mind-body complexes, I am this body, I am this person that I think I am, that yourself, you're not indeed that self that you think that you are. Na yatra tvam swayam shivam, and neither me nor you are there. So this being the case, so what remains there? Yatraiva nischayam shantam. That shantam is nischayam. Because individualities have gone. You know, we used to have this great philosopher, G. Krishnamurti. He passed away. Amazing philosopher. He started as a theosophist, but this is what he used to say. All these interactions between human beings are nothing but interactions between images, mental images of who we think we are. Like person A and his or her spouse, person B. Let's say person A, Ram Singh, has a wife called Swapna Singh. Okay. And their children, Dharam Singh, Karam Singh, whatever Singh. Okay, all Singhs. So this Ram Singh has an idea of mental concept of who he is. Oh, I'm a good man, I work hard, I raise my family, I uphold all the values. And then Swapna Singh thinks of what she is. Oh, I'm a good housewife, I take care of the children, I take care of the husband, I do this, I do this, I do this, I do a lot of social service, whatever, etc., etc. Now, Ram Singh has an image of himself, which let us call it A. A. Now, Ram Singh's wife, Sapna Singh, has an image of Ram Singh, which is not exactly what Ram Singh thinks of himself. So Ram Singh's wife, Sapna Singh, has an image of Ram Singh, which is B. Okay, good. So now already we have two images. This is common experience. Your wife or your husband don't think that what you really think of yourself. Oh, I'm such a good wife. Why is he just bugging me all the time? Oh, I'm such a good husband. I do whatever she asks me to do. She's the ringmaster with a whip in her hand. I do all that she asks me to do. Why does she think I'm not good? So the images are Ram Singh. There are already two images. A, what he thinks himself, and B, which his wife thinks he is himself, what he is. So Ram Singh A, Ram Singh B. And his children have different image. Oh, my father is a great hero. Oh, okay. That is Ram Singh C. Now you go to work, and somebody who doesn't like Ram Singh doesn't think of what Ram Singh thought of himself, what Ram Singh's wife thought of himself, what Ram Singh's children thought of Ram Singh. No. So already we have Ram Singh A, Ram Singh B, Ram Singh C, Ram Singh D, and so on and on and on and on. Ram Singh infinity. Who is the real Ram Singh here? Now, this is only Ram Singh. What about Swapna Singh? Swapna Singh A, Swapna Singh B, B being what Ram Singh thinks of Swapna Singh, and C being what the children think of herself, and D being what the society thinks of her, and E being what at work or wherever she thinks, and F being what the parents think of herself, and G being what her siblings, sisters, brothers thinks of herself, and H being what her sister-in-law thinks of herself. So how many Swapna things we have? Now, the interaction taking place between all these images, you think there's going to be peace? Nah, forget it. Anyway, and mind you, these images are not even constant. What Ram Singh thought, which was Ram Singh A, has been changing all the time. Ram Singh A was not Ram Singh A 2-year-old, what not Ram Singh A 10-year-old, what not Ram Singh A 15-year-old. No. So that A itself has been changing. And then comes into the picture
B and C and D and E and F and so on and so forth. Therefore, there is absolutely no possibility of any peace and harmony. No. So that is why when that tvam and aham are gone, nayatraham nayatratvam nayatratvam swayam swayam, when all these are completely dissolved, nischayam shantam mo nidagaha. Very good. 42. You know, there was this beautiful movie. You know, sometimes the Vedanta doesn't have to, you don't have to look for Vedanta in Upanishads. In day-to-day life, it's everywhere. Vedanta in your everyday experience. What's happening around you, every day there is Vedanta. In 1970, Raj Kapoor produced this movie, Mera Naam Joker. There's this one particular song, Hey bhai, jara dekh ke chalo, aage bhi nahi, piche bhi, bhayem bhi nahi, dhayem bhi, upar bhi nahi, niche bhi, hey bhai, jara dekh ke chalo. I feel like singing the whole thing, but we have a class to do. There he says, तू नहीं मैं नहीं ये नहीं वो नहीं बाप नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं कुछ भी नहीं. None of this, neither you nor me, because this say boy, ये दुनिया सर्कस है, 3 घंटे का सर्कस है. पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद मैं नहीं ये नहीं वो नहीं तू नहीं मैं नहीं ये नहीं वो नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं कुछ भी नहीं, खाली खाली कुर्सियां खाली, एवरीथिंग. बिना चिड़िया का पिंजरा है. Therefore, a boy, therefore, there is neither you. That is Ribhu Gita right there. Yes, मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, nothing. Anyway, so नयत्राहम नयत्रत्वम नयत्रत्वम स्वयं स्वयं यत्रैव निश्चयं शांतं तन्मयो भव सर्वदा. So Vedanta is everywhere. You don't have to really go to Upanishads to look for them. Even in a very simple songs like this, if you have the eyes to see, it's there. And 42. Yatra modate nityam yatraiva sukhamedate. So, okay, so when all this you and me and he and she and it, this and that and it and but and everything is gone, and because everything is gone, the conflicts are gone, only harmony. So when the conflict's gone, what remains, what results? Happiness. Yatraiva modate nityam yatraiva sukhamedate. Okay, so when the conflicts are gone, what is the first thing to go? Dukkha bhayam. Yatra dukkha bhayam nasti. So when the dukkha bhayam is gone, so what results? Yatraiva modate nityam yatraiva sukhamedate. Now you have to watch these words very carefully. See what Ribhu is using here. He is not saying yatra dukkham nasti. Dukkham, of course, is nasti. There is no dukkham there. But what he is using here, dukkha bhayam nasti. More than the dukkham, it is the dukkha bhayam that afflicts all of us. Oh, what's going to happen to me if she leaves or he leaves? What's going to happen to me if the job leaves or the house leaves? What's going to happen? Nothing is going to happen. Whatever is going to happen is going to happen. What are you going to do? Just do what you need to do. So there, remember, this is all phobia. In reality, we have to deal with things. You know, things happen. We have to deal with them. But to make a mountain out of a mole, as a saying there, is human tendency. The little things that we blow up mentally into huge anxieties, phobias, that is what Ribhu calls
Dukkha Bhayam, and Tirumular calls it Marattai Maraitadu Mamadayanai, Maratul Marindadu Mamadayanai, Parattai Maraitadu Parvanjabudam, Paratul Marindadu Parvanjabudam. We all create this wild elephant out of a wooden elephant. You see, this wooden elephant looks so real, and we are sweating bullets. Oh, this is going to kill me. Most of our life is like that. What's going to happen? Nothing is going to happen. And then based on that fear, when you interact, there is problem. Based on the fear of insecurity, based on the fear of what's future uncertainty, when you act based on those fears, problems and problems and problems, then you mess it up yourself. Because what you're based on your assumptions when you act, what could have been an excellent life, you messed it up. So that is what Ribhu says here. Yatra dukkha bhayam nasti, that bhaya, that phobia of dukkham. It's not that dukkham is of course not there, but what he's saying is dukkha bhayam nasti, that phobia is also gone, because the reason he uses the word dukkha bhayam, because that's what most of us are suffering from. The uncertainty, dying. What's going to happen when I die? Fear of uncertainty, fear of the unknown. Nothing is going to happen. You're not going to there. You're not going to be there after you're dead. So what is that to worry about? The fear of the death is the most fearsome fear, the most number uno fear. So, but then it is very simple. We are not going to be there. So what is there to be worried about? Okay. Yatra dukkha bhayam nasti tanmayo bhava sarvada. And also see here, so when the dukkha bhayam is not there, it's only happiness. And the word he uses here, yatra eva modate nityam, yatra eva sukhamedate. And when we did our tattva bodham, if you remember, and some of the last verses, when Adi Shankaracharya was describing what Satchita Anandam, when he was describing Anandam, we saw these few words, that Priya, Moda, Pramoda. And we analyzed that Priya is when you look at a thing and you like it. The moment you look at a thing, you're happy. That is Priya. Something that you like, and you're looking at it, and you're happy, you're smiling already. Like when you walk into an Indian restaurant and you see all this food on the buffet, you see, if you watch people, I watch people when I go to an Indian restaurant, I go watch people's faces. So they go near the buffet, they're all beaming. They don't even touch the food. The look of the food. You got to watch people. So you see the big smile on the face. So that is Priya. And when they get it on the plate, they're very happy. That is Moda. So now they have it. They have it. So here, the reason Ribhu uses the word Moda, and when they of course consume it, when they enjoy it, then it's called Pramoda. Okay, Pramoda. So that is Pramoda. So here he uses the word Moda because now you have reached that goal of Tatu and become Tanmaya. So when you've reached the goal, when you have attained it, when you've grasped it, when you grasped your plate of food from the buffet, that's yours now. So so then you're happy. Now he doesn't use the word pramoda, yatra pramodate, because pramoda means then involves two people. Bhokta, bhoktritvam involves the enjoyer and the enjoyed. So here there's no bhoktritvam because there's nobody who is enjoying and nothing that is being enjoyed. So you have reached the goal. That's why you got it. So that is why modate. The moment you got it, that you're one with it, so you're modate. So then there all this bhokta and bhoktritvam, everything disappears. Just as karta and kartutvam. That's why he says, when the dukkha bhayam is gone, when all this tvam and my and you and are gone, then the dukkha bhayam, the phobia resulting from this complicated relationship is gone. So when all that is gone, not only persons, even we fear of animals, we fear of bacteria, fear of viruses. So all those things that are completely gone, then there's dukkha bhayam gone, then what remains is modate nityam sukhamedate.
tanmayo bhava sarvada. Okay. Yatraiva chinmayakaram, yatraivananda sagaraha, yatraiva paramham sakshat, tanmayo bhava sarvadam. Yatraiva paramam sakshat. Once you are in the tat state, if you remember again, I'm quoting from our Tattvabodham because the text we are all familiar, we went through that. If you remember when Adi Shankaracharya was defining Atma, the disciple asked, Atma tarihi kaha. When the disciple asked him, he said, Panchakoshat, Panchakoshatita sanna, Satchidananda Swarupaha, Panchakoshatita. The word Tita means beyond, Paramam, beyond, transcending, beyond all your Panchakoshas, which is Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. So beyond all these koshas is that Atma. So that's what Ribhu says here. Yatraiva paramam sakshat. That is that complete transcendent reality. Sakshat means it's just real. You are just in it. That is it. Yatraiva paramam sakshat. In this chapter, rest of this chapter, he would use this word sakshat in the last few verses from 50 to 60. Yatraiva paramam sakshat. So only the transcendental reality is there. And what is the transcendental reality? It is chit maya akaram. Chit maya akaram, chinmaya akaram. Akaram means it's an expression of consciousness. It's a form of consciousness. Chit maya means it's full, that akaram. It's nothing but that chit, nothing but that consciousness. So being beyond all these panchakoshas, which are the cause of all the problems, and which are all the cause of suffering, because so long as you're in the koshas, identifying with the koshas, whether it's a manomaya kosha, pranamaya kosha, or annamaya kosha, so long as there is identification with all these koshas, there is problem. So beyond all the koshas, it is just sagaraha, ananda sagaraha. It's an ocean of bliss. So, because it's beyond all this nonsense. Okay. Yatraiva swayam hevatra swayam heva tadevahi. Is that it? 43 here. Okay. Saw that. 41. Okay, so 42, 43. Now we are in 44. Yatraiva swayam hevatra swayam heva tadevahi swasvatmanokta bhedosti tanmayo bhava sarvada. The key word in this verse 44 is swasvatmanokta bhedosti. So, Swas Atmana Abhedo Na Asti. So, which means there is no difference between what you think as yourself with this mental image and what is the real self. Swa Atmanaha Tata Drishtaha Surupe Avasthanam. That Swatmana, which is the real self, which is the Atma, there is no difference, there is no bheda between that self and you, which means you are that self. So that little bit small self is gone and you are that big self because there is only one self. So therefore, Swayam, there you are only you. Atra eva swayam eva atra, swayam eva atra, in which one himself is indeed that. Swayam evatra, that, tat. So you are that, in tattvam asi, you become that, you are that. Yatra eva swayam evatra, in which one himself is indeed that, and one is swayam eva tatevahi, swayam eva tadevahi. So swayam eva tadevahi, one is that self itself.
Swasvatma, and then all the differences dissolve. Swasvatmanokta bhedosti, when there is no difference of bheda between oneself, which is Swaha, and one's real self, which is Swaatmanaha. So there's no bheda between Swaha and Swaatmanaha, and then everything is that one unity consciousness. Okay. 45. Yatraiva paramanandam swayameva sukham param yatraiva bheda kalanam tanmayo bhava sarvada. It's a slight repetition in a different way. Abheda kalanam. He said there was no Veda in the previous verse, but here says there's Abheda Kalanam. And Kalanam, if you remember in our last class, I just put up all the definitions from Monier's dictionary, Wilson's dictionary, and all the other dictionaries. So Kalanam has so many meanings, and Ribu uses the word Kalanam in so many chapters and so many times. But here, in this context, what being, the Kalanam means the state of being, state of becoming, state of being. So Abheda Kalanam means the state of non-difference, the state of unity, the state of Advaita. So there, Tatraiva Abheda Kalanam. So there is a state of Advaita, state of non-duality. It's the state of being, the self being in the self, small self being in the real self. So Yatraiva Abheda Kalanam. So therefore, this being the case, there is Sukham Param, the transcendental joy. Sukham Param, not the Yika Parasukham, we call it. So Yika Sukham is not the transcendental joy. Parasukham is the transcendental joy, eternal joy. Yuka Sukham is always transitory, always fluctuating. This Sukham in this world is become Dukkha, is like two sides of a coin, but it is this transcendental Sukham, because there is Abheda Kalanam. Same message in a different way. Yet Paramanandam and transcendental happiness. And then Yat na yatra chanum hatram va na yatra manaso malam na yatra chadadhamyeva tanmayo bhava sarvada. Verse 46. So there is neither mind or matter. Our last thing, so just with just these little captions here. So the state of being in non-duality, previous one. Let's capture right from the summary. So number 1, 41, neither me nor you. 42, no there being, no fear of sorrow or suffering, because it's neither me nor you, so there is no fear of sorrow. No fear of sorrow, bhayam is not there, and that bhayam not being there, what remains is only happiness, the ocean of joy, and then because there is only self alone is, and then the next verse, there is absence of duality. It's a state of non-duality. And then there is neither mind or matter. So verse 46 is, he says, neither the mind or matter is there. So neither the mind or matter being there, or not the mind or matter either, because both of them are not there, so it really does not matter. Mind or matter is not there, nothing matters. So it's only joy. So he says, na yatra chanam hatram va, na yatra manaso malam. Most of the time when he uses the word manaha, he uses the word malam. So malam means it is not in a good way. Something, mind is dirty. Mind is something that you don't want. Mind is want something, if it stays, the malam stays in you, then you're going to get constipated, you're going to get problems. So that malam has to go. So get rid of it. So that is manasa malam, that mind malam has to go. And what else is not there? Atom is not there. What he means when he says atom is not there is nothing, there is no material. This is just, everything is just pure Brahman, everything is consciousness. The whole universe is in an unmanifest state. It's just pure waves. There is no matter, there is no particle, nothing there. Na yatra chanam hatramma, na yatra manaso malam. So, this one,
But what Ribhu says here, Avayar said long time ago, Avayar in Tamil. அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் கணுமுற்று நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி விநாயகர். அணுவிற்கு அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் கணுமுற்று நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி வேடமும் நீரும் விளங்க நிறுத்தி கூடுமை தொண்டர்குலாத்துடன் கூட்டி அஞ்ச கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை நெஞ்ச கருத்தின் நிலை அறிவித்து தத்துவ நிலையை that's what all that we are talking about in this chapter. That's what we are talking about. தத்துவ நிலையை தந்து எனையாண்ட வித்தக விநாயகம் விரைகளுள் சரணே ஓம். தத்துவ நிலையை விநாயக விரைகளுள் Vinayaga gave me that state of tat. He gave me that. And what is that state? Anuvirkanuvai, beyond the atom, no, atom of the atom, Anuvirkanuvai. Appalukapala, so going into the atom, going into the nucleus, and then going into the quantum field. Appalukapala, beyond the beyond. She's talking quantum physics here. That's what Ribhu says in a word. There is no atoms, nothing there. So, na yatra cha anumatram, na yatra cha anumatram va, na yatra manaso malam, neither mind nor matter, na yatra, therefore neither mind or matter being not there, because neither the body or mind, there is no activity. Dadam yeva. Dadam literally means something to give. So there is no give and take. There's no busyness there. There's no busyness there. No business there. So none of this have any business there. So the mind or the matter don't have any business, so therefore no busyness there. So mind or matter have no business in that place, so therefore there is no busyness. So it's just all quietness. This is non-busyness. Okay. Na yatra chadadhamyeva tanmayo vava sarvada. Nothing like I give or I do or I take, none of that. Okay, no commas. And then, oh my God, now Ribhu is killing 4 people here. He's killing 4 people and he's declaring them dead. What are those? So here the title for this verse is Mind, Body, Complex and Memory are put in the morgue. Mind, body, complex and memory, all the problem things are morgued. 4 persons declared dead. Mind, body, thoughts, and memory. Wow, what a joy that will be when all this is gone. when you get rid of this thought that I am the body, when you get rid of this thought that I am the mind, when you get rid of this things, I am these thoughts, when you get rid of these memories, oh my God, if only we can get rid of all these memories. So there, Ribhu says, these are all morgued. Yatra chittam ratam, chittam is dead. Deham maranam, mano maranam. Yatra chittam ratam deham, mano maranam. Atmanaha, your mind, Atmanaha, mind, your body, your chittam, and your memory, smriti layam. Smriti, memory, gone. Yatra chittam ratham deham, mano maranam atmanaham. Yatra smrtilayam yati, there, Bodhidagaya, be in this state. And Ramana Maharshi said the same thing in his Upadesha Saram, beautifully. It's on the left side, if you can read the Devanagari. Manasantum kim margane krite naiva manasam marga arjavat. Manasam tu kim margane krite. If you start analyzing what really this mind is, naiva manasam, there's no mind. We have this famous joke about people, I don't want to name what state, but we can say about, we always used to make these jokes. So one person was asking, do you mind if I do this?
No, I have no mind. No problem. I have no mind. So that's Advaita Vedanta. Manasam prakim margane krite naiva manasam marga arjavat. So naiva, this is the royal path, my friend. Ramana Maharshi says. What is the royal path? Go beyond the mind, kill your mind. Because the mind is what is making all these problems, makes you think that you are that, you are this, and mind even circumvents the buddhi, and mind in cohorts with the ego makes you do all the things that your buddhi says don't do. So, therefore, get away from that mind. So, but then in that state, Vibhu says, mind, there's no more, none of this. Yatra chatamrutam deham manomaranamatmanaham yatra smrtirlayam. And memory is gone. Tanmayo bhavasarvadam. You know, one reason, to some extent, we are able to live peacefully in this world with our families, with our relationship, is because the memories of your past janmas are not there. Can you imagine if you had memories from all your past janmas and we happen to be going into Publix and you see your worst enemy from your last incarnation? What left? So it's a good thing you don't have memories. Okay. Yatra smritir layam yati, where the memory has finally undergone dissolution. Good. Therefore, when the four persons are dead, the one person, I, made up of this, that small I that made up of these four, aham, is no more there. And so when the small I that was made up of those four persons that are dead, because they were dead, the small I is also gone. And when the small I is gone, all these complexes associated with the small I, his or her desires, they are also gone. That is this verse. Yatraivaham mruto nunam, yatraiv aham mruto nunam, definitely that small self having gone, yatra kamo layangataha, all the desires and everything which are the root cause of all these problems, Buddhist teaching. Desire is the root cause of all these problems. Kamo layangataha, they were gone, and since they are all gone, there is nothing but Paramanandam. Okay. And then further, Ribu is killing more people here. More disappearances. What else is disappearing? The Holy Trinities are disappearing now. From a human level, he is going up the scale. The Trinities are gone. And also, along with the Trinities, the busy bodies are gone. And the busy bodies are gone. You know, most of the busy bodies, they're all around the society. In every society, you get these busy bodies. You see them in temples, you see them in friend circles. I call the busy bodies. There is one or two always there. Yatra deva triholinam disappeared. All this Trinity, Holy Trinity gone. Brahma, Vishnu, Rudra is gone. Only Lord Shiva, Paratpara, Parameshwara remains. Yatra deva triholinam, yatra dehadayo amritaha. All these things, the 9 yards, the whole enchilada that goes with the body. Body means deham. That's why Ribhu says dehadayo. He doesn't, there are so many of those, so he couldn't name them, so he says dehadaya. All those things. When he says annamaya kosa, then it is pranamaya kosa. Then the moment he says pranamaya kosa, then there is manomaya kosa. Then there is vijnanamaya kosa. Because when the body is there, all these kosas are there. So therefore he says dehadayo mritaha, they are all gone. So the busy bodies got busy, not only yours. When he says Devadaya means all the busy bodies, all the bodies, yours and other persons, this, that, and all these busy bodies, including the Trinities, are gone. So since the busy bodies are gone, the busyness is gone. There's no more business. Nayatra vyavaharosti. Vyavahara means busyness. Busy body gone, but there is no more business. So nayatra vyavaharosti tanmayo bhavasarvadam yatra devastraholinam yatra dehadayo mrutam nayatra vyavaharosti. Business is gone, therefore tanmayo
bhava sarvada. தொல்லையிரும் விரவி சூழும் தலை நீக்கி அல்லல்லர்த்தியமை ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் மாதவூரங்கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன். ஓம் சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம். நமச்சிவாய வாழ்க. நாதன் தாழ் வாழ்க. பழுதும் என் நெஞ்சில் கோகழி ஆண்ட குருமனிதன் தாழ்வாழ்க. ஆகமம் ஆகி நின்று பான் தாழ்வாழ்க. ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க. வேகங்கெடுத்தாண்ட வேந்த ஜகந்தன் பெய்கடல்கள் புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் கரங்குவார் உள்மகளும் கோணல் சிறங்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் களல் வல்க. ஈசன் அடி போற்றி எந்த அடி போற்றி தேசன் அடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் அடி போற்றி சீரார் பெருந்துரை நம் தேவன் அடி போற்றி ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்றாதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யான் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி எண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் களலிறைஞ்சி விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொழியாய் என் நிறந்தலை இலாதானே நின் பெரும் சீர் புல்லா வினையேன் புகழுமார் ஒன்றறியேன் புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்றை தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தழைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன் உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே வெய்யாய் தனியாய் இயமானாம் விமலா பொய்யாயினையெல்லாம் போயகல வந்தருளி மெய்ஞானமாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்களவு இறுதியில்லாய் அனைத்துலகம் ஆக்குவாய் காப்பாய் அளிப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நனியானே மாற்ற மனம் கழிற நின்ற மறையோனே கரந்த பால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தாற் போல சிறந்த அடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் விண்ணோர்கள் ஏத்த மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை மறைந்திட மூடிய மாய இருளை அறம்பாவம் எனும் அருங்கயிற்றால் கட்டி புறந்தோல் போர்த்தங்கும் புழு அழுக்கு மூடி மலம் சோறும் 9 வாயில் குடிலை மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்துள்ளொருகம் நலந்தானிலாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள் கடல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேனார் அமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்து பாரிக்கும் ஆரியனே, நேசருள் புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சங்கெட பேராது நின்ற பெருங்கருணை பேராரே, ஆரா அமுதே அளவிலா பெம்மானே, ஓராதார் உள்ளத்துள் ஒளிக்கும் ஒளியானே, நீராய் உருக்கி என் ஆறுயிராய் நின்றானே, இன்பமும் துன்பமும் அன்பருக்கன்பனே, யாவையுமாம் அல்லையுமாம் சோதியனே, துன்னிருளே தோன்றா பெருமையனே, ஆதியன அந்தம் நடுவாகி அல்லானே, ஈர்த்தென்னை ஆட்கொண்ட எந்தை பெருமானே, கூர்த்தமை ஞானத்தால் கொண்டுணர்வார் தம் கருத்தில், நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே, போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலா புண்ணியனே, காக்கும் எங்காவலனே, காண்பரிய வேரொழியே, ஆற்றின்ப வெள்ளமே, அத்தாமிக்காய் நின்ற தோற்றச் சுடரொளியாய் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய், மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம், தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள், ஊற்றான உன் ஆரமுதே உடையானே, வேற்று விகார விடக்குடம்பினுட்கிடப்ப ஆற்றே நம்மையா அரணே ஓ என்றென்று போற்றி புகழ்ந்திருந்து பொய்கட்டு மெய்யானார், மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே, கள்ளப்புலக்குரம்பை கட்டளிக்க வல்லானே, நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடு நாதனே, தில்லையில் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே, அல்லல் பிறவி அறுப்பானே ஓ என்று சொல்லற்கரியானை சொல்லித் திருவடிக்கீழ் சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவர் செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ் பலோரும் ஏத்த பணிந்து. சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம். ஓம் சாம்ப சதாசிவ பரமேஸ்வர சுவாமினே நமோ நமः. அத ருத்ரதுர்ஷதி பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே. ஓம் நமோ ஹிரண்யபாஹவே நமः. சேனான்யே நமः. திசாஞ்ச பதயே நமः. நமோ விருக்ஷேभ्यो நமः. ஹரிகேஷேभ्यो நமः. பசூனாம் பதயே நமः. மஸ்ஸஸ்பிஞ்சராய நமः. துஷீமதே நமः. பதீனாं பதயே நமः. நமோ பப்ளுசாய நமः. விவ்யாதினே நமः. அன்னானாं பதயே நமः. ஹரிகேஷாய நமः. பவீதினே நமः. புஷ்டானாं பதயே நமः. மோ புத்ஸ்யஹேத்யை நமः. ஜகதாं பதயே நமः. ருத்ராய நமः. ஆததாவினே நமः. க்ஷேத்ராணாं பதயே நமः. சூதாய நமः. அஹந்த்யாய நமः. வனானாं பதயே நமः. மோரோஹிதாய நமः. ஸ்தபதயே நமः. விருக்ஷாணாं பதயே நமः. மோமந்திரிணே நமः. வாணிஜாய நமः. கக்ஷாணாं பதயே நமः. மோ புவந்தயே நமः. வாரிவஸ்கிருதாய நமः. ஓஷதீனாं பதயே நமः. உச்சைர்கோஷாய நமः. ஆக்ரந்தயதே நமः. பத்தீனாं பதயே நமः. நமः கிருத்ஸ்னபீதாய நமः. தாவதே நமः. சத்வனாं பதயே நமः. நமः சகமானாய நமः. திவ்யாதினே நமः. ஆத்யாதினீனாं பதயே நமः. நமः ககுபாய நமः. நிஷங்கினே நமः. ஸ்தேனானாं பதயே நமः. நமோ நிஷங்கினே நமः. இசுதிமதே நமः. தஸ்கராணாம் பதயே நமः. மோவஞ்சதே நமः. பரிவஞ்சதே நமः. ஸ்தாயூனாம் பதயே நமः. மோ நிச்சேரவே நமः. பரிச்சராய நமः. அரண்யானாம் பதயே நமः. நமஸ்ருகாபிभ्यो நமः. ஜிகாகம் சத்யோ நமः. முஷ்ணாம் பதயே நமः. நமோசிமத்யோ நமः. கஞ்சரத்யோ நமः. பிரகிருந்தானாம் பதயே நமः. மௌஷ்ணீஷினே நமः. கிரிச்சராய நமः. புலுஞ்சானாம் பதயே நமः. மைஷ்மத்யோ நமः. தன்வாவிभ्यश्च நமः. ஓ நமः. தன்வானேभ्यो நமः. பிரதிததானேभ्यश्च நமः. ஓ நமः. ஆயச்சத்யோ நமः. விஷஜத்யश्च நமः. ஓ நமः. மோத்ஸ்யத்யோ நமः. இத்யத்யश्च நமः. ஓ நமः. மாசீனேभ्यो நமः. ஷயானேभ्यश्च நமः. ஓ நமः. சுபத்யோ நமः. ஜாக்ரத்யश्च நமः. ஓ நமः. திஷ்டத்யோ நமः. தாவத்யश्च நமः. ஓ நமः.
सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो अश्वेभ्यो नमः स्वपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमाभ्यादिनीभ्यो नमः विविद्यन्तीभ्यश्च नमः वो नमः मुगनाभ्यो नमः स्त्रिगंहतीभ्यश्च नमः वो नमः नमो गृत्सेभ्यो नमः गृत्सपतिभ्यश्च नमः वो नमः मोव्रातेभ्यो नमः व्रातपतिभ्यश्च नमः वो नमः गणे नमः गणपतिभ्यश्च नमः वो नमः मोविरूपेभ्यो नमः विश्वरूपेभ्यश्च नमः वो नमः मोमहद्भ्यो नमः शुल्लकेभ्यश्च नमः वो नमः मोरतिभ्यो नमः अरतेभ्यश्च नमः वो नमः मोरतेभ्यो नमः तपभ्यश्च नमः वो नमः मुत्सेनाभ्यो नमः सेनानिभ्यश्च नमः वो नमः नक्षत्रेभ्यो नमः संग्रहीतृभ्यश्च नमः वो नमः नक्षत्रेभ्यो नमः तकारेभ्यश्च नमः वो नमः मकुलालेभ्यो नमः कुमारेभ्यश्च नमः वो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो नमः शादेभ्यश्च नमः वो नमः विसुकृद्भ्यो नमः कन्मकृद्भ्यश्च नमः वो नमः नमो मृगयिभ्यो नमः स्वनिभ्यश्च नमः वो नमः मस्वभ्यो नमः स्वपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो भवाय च नमः रुद्राय च नमः नमः सर्वाय च नमः पशुपतये च नमः नीलग्रीवाय च नमः सिद्धकण्ठाय च नमः कपद्दिने च नमः युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च नमः सुधन्वने च नमः गिरिशाय च नमः शिविविष्टाय च नमः मेरुष्टमाय च नमः यशुमते च नमः ह्रस्वाय च नमः वामनाय च नमः बृहते च नमः वर्ष्यसे च नमः वृद्धाय च नमः संवृद्वने च नमः अग्र्याय च नमः प्रथमाय च नमः आशवे च नमः अजिराय च नमः शीघ्र्याय च नमः शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च नमः अवस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च नमः भीप्याय च नमः मोह ज्येष्ठाय च नमः कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च नमः अपरजाय च नमः मध्यमाय च नमः अपगल्भाय च नमः जगन्याय च नमः बुद्ध्याय च नमः नमः शोभ्याय च नमः प्रतिसर्याय च नमः नमो याम्याय च नमः क्षेम्याय च नमः नमो उर्वर्याय च नमः कल्याय च नमः नमः श्लोक्याय च नमः अवसान्याय च नमः मोवन्याय च नमः कक्षाय च नमः नमः स्रवाय च नमः प्रतिस्रवाय च नमः नमः आशुसेनाय च नमः आसुरताय च नमः नमः सूराय च नमः अवबिन्दते च नमः वर्मिने च नमः वरुतिने च नमः बिल्मिने च नमः कवचिने च नमः नमः श्रुताय च नमः श्रुतसेनाय च नमः मोधुन्दिभ्याय च नमः अहनन्याय च नमः कृष्णवे च नमः प्रमुषाय च नमः धूताय च नमः प्रहिताय च नमः विषङ्गिने च नमः विशतिमते च नमः तीक्ष्णे च वे च नमः आयुधाय च नमः स्वायुधाय च नमः सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च नमः पत्याय च नमः काट्याय च नमः नीभ्याय च नमः सूद्याय च नमः सरस्याय च नमः नाध्याय च नमः वैश्रन्ताय च नमः कूप्याय च नमः वर्ष्याय च नमः पट्याय च नमः अवर्ष्याय च नमः मेघ्याय च नमः विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च नमः आतप्याय च नमः वात्याय च नमः रेश्म्याय च नमः वास्तव्याय च नमः वास्तुपाय च नमः सोमाय च नमः रुद्राय च नमः ताम्राय च नमः अरुणाय च नमः शङ्गाय च नमः पशुपतये च नमः उग्राय च नमः भीमाय च नमः अग्रेवदाय च नमः दूरेवदाय च नमः अन्तरे जानीयसे च नमः वृक्षेभ्य नमः ऋकेशेभ्य नमः स्ताराय नमः शम्भवे च नमः यौवे च नमः शङ्कराय च नमः मेस्कराय च नमः शिवाय च नमः शिवतराय च नमः स्थित्याय च नमः पूज्याय च नमः पार्याय च नमः वार्याय च नमः प्रथमाय च नमः उत्तरणाय च नमः आतार्याय च नमः आलाध्याय च नमः रश्म्याय च नमः कन्याय च नमः सिगत्याय च नमः प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च नमः प्रपद्याय च नमः केकुंशिलाय च नमः क्षयनाय च नमः कपर्दने च नमः पुलस्ते च नमः गोष्ठ्याय च नमः गृह्याय च नमः उत्प्याय च नमः गोष्ठ्याय च नमः गृह्याय च नमः सल्प्याय च नमः घेह्याय च नमः काट्याय च नमः वरेष्ठाय च नमः नमो हृदयाय च नमः निवेशप्याय च नमः पांसुभ्याय च नमः रजस्याय च नमः शुष्क्याय च नमः हृत्याय च नमः लोप्याय च नमः उलप्याय च नमः ऊर्व्याय च नमः सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च नमः पर्णसद्याय च नमः प्रमाणाय च नमः अभ्यग्नते च नमः नमाकिदते च नमः प्रकृदते च नमः वो नमः वक्रिकेभ्यो नमः देवानागं हृदयेभ्यो नमो नमः नमो विक्षीणकेभ्यो नमः विचिन्वत्केभ्यो नमः नमानिर्हतेभ्यो नमः नमामि वत्केभ्यो नमो नमः द्रापे अंधसस्पथे दरिद्रनीललोहितं येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी
Shiva Rudrasya Bheshajitayano Mridajivase. Om Shivaya Namaha, Om Maheshwaraya Namaha, Om Sambhave Namaha, Om Pinakine Namaha, Om Sashekara Namaha, Om Vamadevaya Namaha, Om Virupakshaya Namaha, Kapitine Namaha, Om Nilaloita Namaha, Om Shankaraya Namaha, Om Shulapani Namaha, Om Kadbhangine Namaha, Om Vishnu Vallabhaya Namaha, Om Shri Vishtha Namaha, Om Vikanhatha Namaha, Om Srikantha Namaha, Bhakta Namaha, Bhavan Namaha, Sarvaya Namaha, Om Trilokeshaya Namaha, Chidikanthaya Namaha, Shiva Priya Namaha, Bhran Namaha, Kapaline Namaha, Om Kamare Namaha, Om Andaka Surasudana Namaha, Gangadhara Namaha, Lalatakshaya Namaha, Kala Kala Namaha, Kripan Hidaya Namaha, Bhima Namaha, Parasastha Namaha, Mrgapane Namaha, Jatadharaya Namaha, Om Kailasavasaya Namaha, Kavachaya Namaha, Katoraya Namaha, Prantaka Namaha, Shankha Namaha, Shabharudaya Namaha, Basmo Dulita Vigraha Namaha, Samapriya Namaha, Suramaya Namaha, Traimurti Namaha, Ishvara Sarvajñā Namaha, Om Paramatmane Namaha, Om Soma Suryagni Lokshana Namaha, Vishya Namaha, Yajñamaya Namaha, Somana Manchoktrana Sadashiva Namaha, Sreshvara Virabhadra Namaha, Gananatha Namaha, Prajapate Namaha, Hiranyarete Namaha, Durdarsha Namaha, Girisha Namaha, Girisha Namaha, Anagha Namaha, Bhujanga Bhushnaya Namaha, Bhargaya Namaha, Om Giridhanvane Namaha, Om Giripriya Namaha, Krittivase Namaha, Purarati Namaha, Bhagavate Namaha, Pramadadipaya Namaha, Mrityunjaya Namaha, Sukshmatanave Namaha, Jagadvyapine Namaha, Om Jagadgurave Namaha, Om Vyomakesha Namaha, Sena Janaka Namaha, Om Charvikramaya Namaha, Rudra Namaha, Bhutapade Namaha, Sthanave Kirpadya Namaha, Digamra Namaha, Ashtamurti Namaha, Anekatmane Namaha, Om Satvikaya Namaha, Om Shuddha Vigrahaya Namaha, Om Shashvataya Namaha, Mandaprasana Namaha, Jhanam Pashimochakaya Namaha, Mridaya Namaha, Pashupataye Namaha, Om Devaya Namaha, Om Mahadevaya Namaha, Om Abhyaya Namaha, Hare Namaha, Om Bhaganetripati Namaha, Abhyakta Namaha, Dashatvaraya Namaha, Namaha, Usatandapati Namaha, Abhyagraya Namaha, Sahasraksha Namaha, Sahasrapati Namaha, Vorkaprada Namaha, Nanta Namaha, Tarakaya Namaha, Om Samba Sada Siva Parameshwara Swami Namaha, Om Appa Bhotyarane Bhotri Enne Bhotri Aduthe Bhotri Enguna Bhotri Urva Bhotri Oppila Bhotri Ongara Bhotri Sadaya Bhotri Sangara Bhotri Sadra Bhotri Ponne Bhotri Purule Bhotri Manne Bhotri Maniye Bhotri Manala Bhotri Manja Bhotri Guriye Bhotri Gudame Bhotri Kundrai Bhotri Kutta Bhotri Tennaaduடைய Shivane Bhotri Ennattavarkkum Iraiva Bhotri Bhotri Tennaaduடைய Shivane Bhotri Ennattavarkkum Iraiva Bhotri Bhotri Kavai Ganagathirale Bhotri Kailai Malayane Bhotri Bhotri Annamalaikkam Anna Bhotri Kannaramudakkadale Bhotri Bhotri Om Sangam Gugalam Dupam Sugandhasmanoharam Kapilagara Samyuktam Dhupoyam Pradigrihatam Om Durasiddurvam Durvantam Durvatam Yosmahan Durvatitam Durvayam Vayam Durvamastam Devanhamasi Shastidamam Bapridamam Jushtadamam Varnitamam Devahutamam Ahurtamasi Avirdanagam Hrisvam Umagrapayami Sangam Gabilandam Shanasmanam Gilagrasmitam Dhupoyam Pradigritam Pratyakshadipam Darshayami Uddiyepyasya Jatavedopagnan Mama Pashodishamishyamavaha Jivanancha Disho Disa Manahiginsi Jatavedo Gamasvam Purusham Jagatim Vibradagnagihe Kriyamham Paripatayam Paryaptyanantaraya Sarvastomotirasamuttamam Maharbhavatim Sarvasyapte Sarvasijitve Sarvabhevatena Hapnoti Sarvam Jayati Jayati Iti Jayati
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तन्महेशाय विद्महे वाक्शुद्धाय धीमहि तन्नः शिव प्रचोदयात् तन्नाम्बिकाय विद्महे महातपायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् வல்லாண்டு வல்லாண்டு வல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு திந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பும் அடியாமோடும் நின்னோடும் பெருகின்ற ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் வளர் மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவா சோதி வளத்துறையும் சுடர்காளியும் பல்லாண்டு உடைவாளுக்கு முழங்கம் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டு இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி சென்றங்கு சென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி ஒன்ற சகடம் உதைத்தாய் பொருள் போற்றி எரிந்தாய் கடல் போற்றி இன்று உடையாய் எடுத்தாய் குணம் போய்கிடக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்று முன் சேவகனை ஏற்றி பறைவான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் மகாதேவியை வித்மஹே விஷ்ணுபத்னே தீமஹி தன்னோ லக்ஷ்மி பிரச்சோதயாத் ஓம் ஆஞ்சநேயாய வித்மஹே வாயுபுத்ராய தீமஹி तन्नो हनुमान प्रचोदयात् बुद्धिर्बलमेशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगिताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च आनमस्मरणात् भवेत् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् अत्रिपुत्राय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात् हृदये सर्वविद्यानां विशेषे भवरोगिणां रवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ஒளியர்கோன் வெப்பொழித்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழிமிசை கண்மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி ஆழி திருநாவலூர் வந்தொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலை திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி சுகிஸ்மதி புராண அனாலயம் கருணாலயம் நமாமி பகவத் பாதசங்கரம் லோகசங்கரம் ஓம் காளிகாயை வித்மஹே சுதானபாஷின்யை தீமஹி தன்னோ प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्ड नंदी प्रचोदयात् ओम आदित्याय बुधाय च कृष्ण राघवे केतवे नमो नमः आदित्य देवताभ्यो नमो नमः दीपानन्दरमाचमनीं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम मधुभातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वेन शन्तौषधिः मधुनक्तमुषोषसे मधुमत्पार्थिवघम्रजः मधुद्योरस्तनपिता मधुमाना वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 सर्वं मधुत्वम् कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओम नीराजनं समहांगल्यं सूर्यकोटिसमप्रभम् अहं भक्त्या प्रधास्यामि स्वीकृतदयानिधे न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं मे भाति ॐ
तस्मै पञ्चमगं होद प्रत्यशृणोत प्रपञ्चहूतो भवत् पञ्चहूतो हवैनो नैषः संवाहेतं पञ्चहूतगं सन्तं पञ्चहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय हि देवाः आत्मन् नित्यामन्त्रयतम् ॐ ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे हस्तु सदा शिवो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुराय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सुराय शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। चार्तदीपं दर्शयामि सर्वपाप्नवनात्मरक्षां धारयामि। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि अपां पुष्पं वेद पुष्पः चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् एवं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् यो अग्निरायतनं वेद आपो वा अग्निरायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् यो वायुरायतनं वेद आपो वै वायुरायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् यो मुष्यतपतः आयतनं वेद आपो वा अमुष्यतपतः आयतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् यश्चन्द्रमसः आयतनं वेद आपो वै चन्द्रमसः आयतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् एवं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् य एवं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् संवत्सरं वेद आपो वै संवत्सर य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै नाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। भुजगेश्वर स्वामिने नमो नमः। वेदोयुक्त मंत्रपुष्पं समर्पयामि। ओम ऋषिगणवंदित स्वामिने नमः। ऋग्वेद प्रिय ऋग्वेदमवधारयामि। Agni Migile Purohitam
Param Ratnadatamam. Om Yajnarakshaka Swamine Yajurveda Priya Yajurvedamavadharayam Ishetva Chetpava Yavatopa Yavastadevo Vasavita Prapayatu Shreshtatmaya Kanmane Harihi Om Sampasiddhachavarmeswara Swamine Samagana Priya Samavedamavadharayam Agna Ayahi Pitaye Grunano Havyadataye Nihota Satsi Parihishi Harihi Om Agamarakshaka Swamine Atharvanaveda Priya Atharvanvedamavadharayam Sanno Devi Rabistaya Apo Bhavantu Pitaye Sanyora Bisravantu Naha Harihi Om Nakarmanana Karmanana Prajaya Danena Tyagena Ke Amrutatpamana Shohu Parena Nakam Nihitam Guhayam De Prajate Tatyatayo Vishanti Vedanta Vijnana Sunishtitata Sanyasa Tatyataya Shuddha Sattvaha Te Brahma Loke Tuhahantakai Paramrita Parimuchanti Sarve Dahrang Vipapam Paramesh Mabhutam Yat Pundalikam Puramatya Sakas Tatrapidaram Gaganam Vishokas Tasmin Yadantas Tadupasita Yam Yo Vedadaus Paraprokto Vedante Chapratishpitaha Tasya Prakritilīnasya Yaparasa Maheshwaram Jnana Sambandhavagi Salala Sundar Manivachagad Giyamana Stotra Priya Devahara Priya Devaharamavadharayam Sotrunai Vediyan Sodivan Havan Sotrunai Tirundari Porunda Kaitola Sotrunai Vediyan Sodivan Havan Sotrunai Tirundari Porunda Kaitola Katrunai Putior Karalu Bhajanam Natrune Avadu Namachivaya Ve Natrune Avadu Namachivaya Ve Akila Thevaram Akila அம்மாவா போடுங்க யார் மாமி போடுங்க உருக்கி உள்ளொளி சுருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினை தெரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமையே சிவபெருமானே யானை கவர்ந்து கேட்டு கேட்டு அருள் திருதல் வேண்டும் ஆறுகளுக்கெல்லாம் நன்றி எப்பாரும் எப்பதமும் வெங்கனும் எந்தையினர் அருப்புகளை தெற்காத மாற்றம் கழிப்போக அருஜோடு செலுத்துதல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவனினை பிரியாத நிலைமையில் வேண்டும். ஓம் அண்ணல்லே என ஆண்டு கொண்டருளிய அமுதே பின்னிலே மறைந்து அருள் புரி வேத நாயகனே கண்ணினால் திருக்கைலையில் இருந்த நின் கோலம் நன்னி நான் தொழ மகிழ்ந்தருள் புரியன பணிந்தவார் வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் பாத மலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுமாம் வாழ்க அந்தனர் வானவரான் இன்னம் வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆன் இன்னம் வீழ்க தன் பொன்னல் வெந்தன்னும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகமும் உயர்தீர்கவே வான்முகில் வளாது பெய்க மல்லிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன் முறை அரசு செய்க குறைவிலாதுயிர்கள் வாழ்க
நான்மறையரங்கள் ஓங்க அற்றபம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெப்பை கூறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வே ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன் அணங்கு வாழ்க ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன் அணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம். ஹரஹர நம பார்வதிபதையே. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி. பாகம் பெண்ணுரானாய் போற்றி. காவாய் கனகத்திரளே போற்றி. கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி. அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி. கண்ணாரமுத கடலே போற்றி போற்றி. யாராவது பாடுவீங்களா? நீ பாடுவியா மாமி? நீங்க ஓம் ஸ்வஸ்தி. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்ய ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः हरिः ஓம் ஸ்வஸ்தி மந்திரார்த்த சத்யா சபலா சந்தி இதி பவந்து மகாந்தோ அனுகிருண்ணந்து. ஓம் தேவதேவோத்தம தேவதா சர்வபௌம அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயக ஸ்ரீ விஜயீ பவம். சிருஷ்டி சம்ஹார திரோதன அனுகிரக பஞ்சகிருத்யபராயணஸ்ய அத்ர விராஜிதமான காமாட்சி தேவி சமேத புஜகேஸ்வர சுவாமினஸ்ய அத்தியனுஷ்டிதமான பானுவாசர பிராத்தः கால ருத்ராபிஷேக கங்கோதக சுத்தோதக க்ஷீரததி ஆஜ்ய சர்க்கரா மதுரச பலரச ஸ்நானாதி ருத்ராக்ஷோதகாதி பஸ்மத்ரவ்யாதி அபிஷேகாராதன ஷோடச உபச்சார ருத்ர திருஷதி शिव अष्टोत्सनामावली पूजा मध्ये संकल्प प्ररभ्य तक्षण पर्यन्तं संभावित समस्त मंत्र लोभे तंत्र लोभे क्रिया लोभे नैवेद्य नीत लोभे सर्वं शास्त्रानुष्ठितं भूयादिति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु. तथास्तु. देवदेवोत्तम देवता सर्वमैक्लाण्डघोडि ब्रह्माण्ड नायक श्री विजयी भव. अद्य अनुष्ठितमानं शिव अष्टोत्सनाम पूजा मणि अभिषेक आराधन षोडशोपचार रुद्र त्रिशति पूजा यजमानस्य त्रागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य समस्त संकट निवारण सिद्धिरस्तु. धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्राप्ति सिद्धिरस्तु. समस्त सन्मंगलानि सन्तु इति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु. तथास्तु. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम विशेषतः अत्र अनागतमान यजमानस्य काश्यपगोत्रोद्भवस्य औरणी नक्षत्र मेषराशौ जातस्य सत्यनारायण शर्मः नामधेयस्य समस्त शारीरिक रोगादि निवारण सिद्धिरस्तु. वैद्येश्वर अनुग्रहेण समस्त वैदिक चिकित्सा निर्विघ्नेन प्राप्ति सिद्धिरस्तु. अतिशीघ्रेण संपूर्ण आरोग्य आयु प्राप्ति सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु. ततस्तत्र आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य परिवारस्य सकुटुम्बस्य समस्त शारीरिक रोगादि मानसिक दुःख संकट निवारण सिद्धिरस्तु. पार्वती परमेश्वर अनुग्रहेण ज्ञान वैराग्य प्राप्ति सिद्धिरस्तु. ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति सिद्धिरस्तु. आत्मज्ञान वाप्ति सिद्धिरस्तु यदि भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु. तथास्तु. सत्या ह्येषा आशिषः सन्तु. तथास्तु. अयं धर्म उत्तरोत्तर अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु. तथास्तु. सत्या ह्येषा आशिषः सन्तु. तथास्तु. ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे निधाजनं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष भुजगेश्वर साष्टांग नमस्कारान् पञ्चांग नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशनलिङ्गं तत्प्रणम् देवमुनिप्रभरार्चितलिङ्गं कामकरलिङ्गं प्रवेशासनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिव। ॐ नमः शिवाय 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 सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बोधिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय 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 कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं राक्षसयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं राक्षसयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ॐ नमः शिवाय 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 कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यप्पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं शिवार्पणम् एकविल्वं
Sivarpanam. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.